Welcome back to all of you. In this video, I'm going to tell you one of very important topic of your 11th class psychology book, and the chapter is third. The chapter name is The Basis of Human Behavior. On today's topic is the structure of brain. As you can see in this diagram, according to the location, brain can be divided into three parts. First is forebrain, second is midbrain, third is hindbrain. So let's understand this structure of brain in detail. So according to this diagram, I just start with this cerebrum, which is one of the largest part of the brain, and the outer surface of the cerebrum is also known as cerebral cortex, which is highly developed. So sometimes this क्वेश्चन में आस्क इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाईली डेवलप, तो उस टाइम आपको अगर सेरिब्रम वहाँ वर्ड मिसिंग हो तो उस टाइम आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स को टिक लगा सकते हैं. एंड द सेरिब्रम विच कंप्राइजेस टू हाफ्स, द राइट हाफ ऑफ इज कंट्रोलिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट कंट्रोल द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी. बेसिकली दिस डेवलपिंग फ्यू थिंग्स इन अस, जस्ट लाइक यू कैन थिंक, you behave differently, you can develop your personality, you have certain kind of senses like hearing or sight, you must have this emotional feelings just because of this cerebrum. और कई बार आपने सुना होगा कि that boy, that girl, that men, women are smart, intelligent, उनका cognitive mind जो है बहुत smart है. It was just because of this cerebrum. So the next part is hypothalamus. So the hypothalamus, which is one of the smallest structure in our brain, but it plays a very vital role in our behavior. है तो छोटा ये size में, लेकिन ये बहुत important role play करता है. How it plays a very important role? Because it regulates the psychological processes which involves the emotional as well as the motivational behavior, such as जो हम daily activities करते हैं like eating, drinking, sleeping. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस पार्ट से होती है हमारे ब्रेन के. इसके साथ साथ में इट ऑल्सो रेगुलेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी, सच एज जो हार्ट बीट हमारी कंट्रोल हो रही है या फिर हार्ट बीट जो चल रही है, ब्लड प्रेशर है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो हार्मोन्स हमारे रिलीज हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से, वो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है. Next is thalamus, which consists an egg-shaped cluster of neurons which is located on the upper side of the hypothalamus. अब एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे, hypothalamus जो है ना वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है as compared to thalamus. और इसका मेन काम क्या होता है thalamus का? It receive all the incoming sensory signals from the sense organ and then it send them to the appropriate part of the bodies. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम थैलेमस का ही होता है. जितने भी सेंसरी सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करता है और उसके बाद में उनको प्रॉपरली रिसीव करने के बाद में कॉर्टेक्स के थ्रू जो है ना वो उनको अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में सेंड करता है. Next important part is brainstem, which consists some of the most important part such as main brain, pons and medulla. Let's understand this main brain first, then we will discuss pons and medulla. So this main brain is relatively small in size, which connected the hindbrain with the forebrain, and it has one of the most important part that is known as reticular activating system, which is responsible for our arousal, which make us alert and active by regulating the sensory impulses. Next is pon, which is connected with the medulla to the main brain, and this pon which receive the auditory signal which is relayed by the ear. तो जितने भी हम लोग सिग्नल सुनते हैं that is just because of pon, and also it contain the nuclei which affecting the respiratory movement and also the facial expression. Next is medulla, though it is the lowest part of the brain which is connected with the spinal cord, but you surprised to know that medulla regulates the life supporting activities such as breathing, sleeping, blood pressure, heart rate. तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी लाइफ सपोर्टिंग है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मेडुला, एंड येस यू कैन से दैट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. सो दिस इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड that why this pituitary gland is known as master gland. Actually this pituitary gland which is divided into anterior pituitary and posterior pituitary. This anterior pituitary which is directly connected with this hypothalamus which regulates the hormonal secrete. तो सबसे ज़्यादा important जो regulate करता है directly हमारे secretion of hormones को from और endocrine glands के through from our body, that is just because of pituitary gland. Next is cerebrum, which is also known as little brain, and it is the major part of the hindbrain which is located above the back of the neck, and cerebrum is the highly developed part of the brain
बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंस, कोऑर्डिनेशन. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. वेन एवर यू वॉक, यू मूव, whenever you dance, whenever you ride a bicycle और मोटरसाइकिल या फिर कोई और व्हीकल अगर ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी कोऑर्डिनेशन है या फिर बॉडी का जो बैलेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ cerebrum. Next is limbic system. It is a group of structure that is a part of old mammalian brain and it comprises the hippocampus and amygdala. Actually, hippocampus which plays an important role in long term memories, and whereas this amygdala which plays an important role in emotional बिहेवियर. एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हिपोकैम्पस के बीच में है, जैसे कोई फंक्शन हो गया, पार्टीज़ हो गई, उसकी जितनी भी मेमोरीज आपके पास आज तक आपके दिमाग में, आपके जहन में ज़िंदा है, दैट इज़ कम अंडर द हिपोकैम्पस. और जितने भी आपके इमोशनल बिहेवियर हैं, जो आपके इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करती है, दैट इज़ जस्ट द सिस्टम अंडर द लिम्बिक सिस्टम, दैट इज़ amygdala. Student, if you really like this video, do like this video and subscribe this channel for the upcoming videos. Thanks for watching.